जी नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक आला सतह पैनल से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करना है। क्या कुछ इस वक्त वज़ीर आज़म ने इस पर कहा है? वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में इस वक्त खिताब करने जा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर हमारे पास मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि आपसे शेयर कर सकें। Excellencies, ladies and gentlemen, I'm happy to participate in this extremely important discussion today. Pakistan appreciates the initiative by Nigeria and Norway to establish the panel on international financial accountability. Each year, billions of dollars illicitly flow out of developing countries. My government came with a robust public mandate to. But what is needed to bring perpetrators of financial crimes to justice? We welcome the interim report of the Fact-Eye panel. The figures of illicit flows mentioned in the report are staggering. $1 trillion is taken out each year by these white-collar criminals. 20 to 40 billion dollars is in the form of bribes received by these corrupt white-collar criminals. $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. $500 to $600 billion is lost each year in tax avoidance by multinational companies. This bleeding of the poor and developing countries must stop. The international community must adopt decisive actions. And these are the ones I propose. Number one, the stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. Two, the authorities in haven destinations must impose criminal and financial penalties on their financial institutions which receive and utilize such money and assets. Three, the enablers of corruption and bribery, such as accountants, lawyers, and other intermediaries, must be closely regulated, monitored, and held accountable. Four, the beneficial ownership of foreign companies must be revealed immediately upon inquiry by the interested and affected governments. Five, multinational corporations must not be allowed to resort to profit shifting to low tax jurisdictions for avoiding taxation. A global minimum corporate tax could prevent this practice. Six, revenues from digital transactions should be taxed where the revenues are generated, not elsewhere. Seven, unequal investment treaties should be discarded or revised, and a fair system for adjudication of investment disputes set up. Eight, all official and non-official bodies set up to control and monitor illicit financial flows must include all the interested countries. Nine, the UN should set up a mechanism to coordinate and supervise the work of the various official and non-official bodies dealing with illicit financial flows to ensure coherence, consistency, and equity in their work. The need of developing countries to protect and preserve their precious resources has become even more vital because of the recession triggered by COVID-19 pandemic. Excellencies, finally I would say that unless these steps are taken, the difference between the rich and poor countries will keep growing. The developing countries will get impoverished. And what we see of the current migration crisis, this will be dwarfed by what will happen in the future if this gulf keeps growing.
गैर कानूनी तौर पर जो रकम इधर से उधर की जाती है यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस सिलसिले में कोई ना कोई लाहे अमल बनाना होगा। आलमी बरादरी को चाहिए कि जो आलमी इत्तेहाद है उसको मजबूत करने के लिए जो भी इक़दाम उठाए जा सकते हैं वो इक़दाम उठाए जाएँ ताकि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो मज़ीद इस्तेहसाल से बच सके। करप्शन और रिश्वत सतानी को रोकने के लिए एक वाज़े निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए। रेवेन्यू हो या इन्वेस्टमेंट को लेकर दीगर मामलात हों, उनका एक बेहतरीन हल, एक जामे हल दुनिया के सामने होना चाहिए और ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनको तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में ला खड़ा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को और आलमी बरादरी को इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज़हार ख़याल जो उन्होंने किया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक आला सतह पैनल जो तश्कील दिया गया था, इस पैनल से वो खिताब कर रहे थे और इस पैनल में जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इज़हार ख़याल किया जाएगा। आलमी फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से ये निज़ाम काम करता है, इस पर एक रिपोर्ट भी इसमें पेश की जाएगी। आला सतह ये जो पैनल है ये 2030 तक किस तरह से पायदार तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है, इस एजेंडे पर आज बात करेगा और पायदार तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करना होगा अक़वाम आलम को। ये तमाम पॉइंट्स वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज सामने रखे गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आज़म